Hello friends, welcome to Cherish to Learn. So in this video series, we will discuss some important topics for OCS Prelims. So today we will discuss about Universal Declaration of Human Rights. Last year, two questions came from UDHR, already asked in previous year prelims. So it's an important topic. So let's start the discussion about Universal Declaration of Human Rights. So Universal Declaration of Human Rights UDHR. So the concept came from Universal United Nations General Assembly Resolution number 217A in Paris. So and UNGA resolution जोड़ा हैतला resolution 217A Paris रे आसला फर्स्ट concept. The UNGA resolution 217A रे concept आसला which talks about human beings talks about human beings. Human beings are born free and equal in dignity and right. Free and equal in dignity and rights, and promote brotherhood, and ended with reason and consent, and should act towards another in spirit of brotherhood. Spirit of brotherhood. Spirit of brotherhood. So these are both free and equal in dignity and right, and ended with reason and consent, and should act towards one another in spirit of brotherhood. जोटा कि UNGA resolution Paris रे इतला 217A रे आस्तिला proclaimed under 217A of UNGA resolution. So the concept emerged after World War II. The concept emerged after World War II and adopted on 10 December 1948. 10 December 1948. That's why 10 December is observed as 10 December is Human Rights Day. Every year 10 December को Human Rights Day हिसाब से पालन करा जाए. So it is a set of 30 articles. So last year दुईटा क्वेश्चन आसला हम क्वेश्चन टा देखिबा तापर पढिबा डिस्कस करिया 30 आर्टिकल विषय. So last year आसला which of the following related to right to privacy. So Article 21 of Indian Constitution, Article 12 of Universal Declaration of Human Rights. Article 12 of Human Declaration of Rights talks about what? तो सेटा आसला तर ऑप्शन अछि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट देखले तब 17 आर्टिकल 17 ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट एंड आर्टिकल 8 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट. एटी गोटे क्वेश्चन देखले यूडीएचआर रु आछि. देन व्हाट आछि व्हिच आर्टिकल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट tells that the right of nationality depends on one's wish. Everyone has the right to a nationality. तो एटा मध्य आछि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट. यूपीएससी रो जदि गोटे पीवाईक्यू देखिबा तो 2020 रे आसला गोटे. तो other than fundamental right, which of the following part of Constitution of India reflects the principles and provision of Universal Declaration of Human Rights? तो प्रियम्बल अच्छी डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी कोटा जार जोटा रिफ्लेक्ट कर प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को रिफ्लेक्ट करुच्ची.
सो एट फर्स्ट हम देखिबा 30 आर्टिकल्स विषय देन क्वेश्चन करबा लास्ट। सो फर्स्ट देखिए व्हाट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो द 30 राइट्स एंड फ्रीडम इंक्लूड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट एगुड़ा इंक्लूड अच्छे दैट इज द राइट टू लाइफ लिबर्टी फ्री स्पीच एंड प्राइवेसी एंड इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट। तो राइट टू लाइफ लिबर्टी फ्री स्पीच एटा हमर फंडामेंटल राइट रे अछि। देन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट एटा हमर डीपीएसपी रे अछि। एंड राइट टू सोशल सिक्योरिटी हेल्थ एजुकेशन एगुड़ा मतलब डीपीएसपी रो पार्ट अछि। एजुकेशन तो हमर फंडामेंटल राइट रे मध्ये अछि। फंडामेंटल ड्यूटी रे मध्ये अछि etc. India took an active part in drafting of UDHR and UDHR is not a treaty. It is not a treaty. So it does not directly create legal obligation. So it's not a treaty. UDHR is not a treaty. तो एतरे कौन सी legal obligation रहू नहीं. Not legally binding also. So the declaration establishes a common standard of achievement for all people and nation. Played a fundamental role in shaping international order emerged after devastation of World War II रे। तो devastation of World War II पर ए concept emerge होइतला Universal Declaration of Human Right। The human right is observed annually in 10th December to commemorate the approval of UDHR by UNGA। 1948 रे होइतला पेरिस रे तार resolution होइतला 217A resolution रे UDHR आस्थिला। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट केबे आसला 1948 एंड 10th डिसेंबर रे हितला। देन देखिबा तर आर्टिकल्स जोडा देखिबा जोडा कि आर्टिकल 1 कोइछि कोन ना ऑल ह्यूमन बीइंग आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट जोडा हम देखिले एंड दे आर एंडेड विथ रीजन एंड कंसेंट should act towards one another spirit of brotherhood। तो बेसिकली आर्टिकल 1 कोन कोछि free and equal in dignity and right and promote spirit of brotherhood। तो आर्टिकल 1 कोन कोछि free and equal in dignity and rights and promote spirit of brotherhood जोटा कि बेसिकली हम कहबा एटा इक्वालिटी ऊपर कहूछि। तो फोकस ऑन इक्वालिटी ऊपर कहूछि। तो मन रखिया इक्वालिटी कथा किए कहूछि ना आर्टिकल 1। देन नेक्स्ट आर्टिकल देखिबा आर्टिकल 2 कोन कहला ना राइट एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट एंड फ्रीडम सेट फोर्थ इन द डिक्लेरेशन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड। तो कौन सी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन में डिस्टिंक्शन रहिबो नहीं ऑल आर इक्वल। तो ऑफ एनी काइंड सच एज रेस कलर सेक्स लैंग्वेज रिलीजन पॉलिटिकल और ओपिनियन नेशनल और सोशल ओरिजिन प्रॉपर्टी बार्थ और अदर स्टेटस। तो नो डिस्टिंक्शन बा डिस्क्रिमिनेशन रहिबो नहीं ऑन द बेस ऑफ रेस कलर सेक्स लैंग्वेज रिलीजन पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन of the country or territory of which person belong to whether it is independent trust or non self governing or under any limitation of sovereignty। तो बेसिकली एटा कोजी कोन फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। तो बेसिकली सिंपल हम जदी कहबा एटा फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऊपर कहूची आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कोन हला फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन आ आर्टिकल 1 कोन कहला इक्वालिटी ऊपर कहला। देन देखिबा आर्टिकल 3 हला कोन एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। राइट टू लाइफ लिबर्टी सिक्योरिटी तो ए तीनटा जिंस राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऊपर किए कहला राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी हला आर्टिकल 3 रे ऑफ पर्सन एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 4 कौन कहला ना नो वन शैल बी हेल्ड स्लेवरी और सर्विट्यूड एंड स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड शैल बी प्रोहिबिटेड इन ऑल फॉर्म। तो एटा कौन कहला ना फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। बेसिकली हम देखिबा एटा कौन कहूची फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी कौन कहला आर्टिकल 4। Then article 5 कौन कहला no one shall be subjected to torture or to cruel inhuman or degrading treatment or punishment।
no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. तो एटा कौन कहले ना बेसिकली कहबा एटा फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर किए गला आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 1 कहला इक्वालिटी, आर्टिकल 2 कहला कोन फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 3 हैला कोन राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 4 हैला फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, आर्टिकल 5 हैला फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर। देन देखिए आर्टिकल 6 कौन कहूची ना एवरीवन हैज राइट टू रिकॉग्नाइजेशन। द राइट टू रिकॉग्नाइजेशन कहला आर्टिकल 6 एवरीवेयर एज ए पर्सन बिफोर लॉ। तो एटा देखिए कोन राइट टू रिकॉग्नाइजेशन एज ए पर्सन बिफोर लॉ, बेसिकली एटा कोन राइट टू रिकॉग्नाइजेशन एज ए पर्सन बिफोर द लॉ, आर्टिकल 6 कहला। आर्टिकल 7 जदी कहबा all are equal before the law and entitled without any discrimination to equal protection of law। तो बेसिकली एटा कोन कहूची ना इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो सिंपल टर्म रे हम कहबा एटा कहूची कोन इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ होची आर्टिकल 7। देन आर्टिकल 8 जो देखिबा everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunal for act violating fundamental right granted him by the constitution or by law। तो आर्टिकल 8 कौन कहूची ना राइट टू an effective remedy by the competent national tribunal for the violation of fundamental right। तो सिंपल टर्म जदी कहबा रेमेडी बाय ट्रिब्यूनल, रेमेडी बाय ट्रिब्यूनल जदी सिंपल टर्म में कहबा रेमेडी बाय ट्रिब्यूनल। तो हमर जे फंडामेंटल राइट होचे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जेटा आर्टिकल 32 रे अछि, एटा होची आर्टिकल 8 रे रेमेडी बाय ट्रिब्यूनल। तो 7 हैला इक्वालिटी बिफोर द लॉ, 8 हैला रेमेडी बाय ट्रिब्यूनल and article 6 कौन है ना right to recognition as a person before the law, right to recognition before the law। then article 9 है no one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile। article 9 कौन है ना no one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile। simple जो टर्म में कहबा freedom from arbitrary arrest, एटा कौन हो freedom from arbitrary arrest, freedom from arbitrary arrest कौन होची आर्टिकल 9 कहूची। then article 10 जदी देखिबा everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by independent and impartial tribunal in the determination of right and obligation of any criminal charges against him। तो जो देखिए सिंपल जदी कहबा एटा होची फेयर पब्लिक हियरिंग ऊपर कहूची, एटा कोन कहूची ना फेयर पब्लिक हियरिंग, फेयर पब्लिक हियरिंग, फेयर पब्लिक हियरिंग। आर्टिकल 10 कोन कहला ना फेयर पब्लिक हियरिंग ऊपर कहूची आर्टिकल 10। then next देखिबा आर्टिकल 11 कौन कहला everyone charged with a penal offense has the right to be presumed innocent until proved guilty। तो एटा कौन कहला everyone charged with a penal offense has the right to be presumed innocent until proved guilty, जोटा कौन हैला innocent until proven guilty। तो सिंपल टर्म में कहबा innocent until proven guilty, innocent until proven guilty। तो निजको प्रूव करि परिबो, तो प्रूव करिया पूर्व कोन एवरीवन हैज चार्ज विथ पेनल ऑफेंस हैज द राइट टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी अकॉर्डिंग टू लॉ इन पब्लिक ट्रायल।
or which has ought the guarantee necessary for its defense. Then Article 12 कौन कहला? No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, correspondence, nor to attack upon his honor and reputation. Everyone has the right to protection of the law. So everyone has the right to protection of law. That is कौन? It is talking about privacy. तो बेसिकली आर्टिकल 12 कौन कहूची ना प्राइवेसी ऊपर कहूची. तो देखिबा आर्टिकल 12 होला कौन? प्राइवेसी. आर्टिकल 12 कौन कहूची? प्राइवेसी ऊपर कहूची. Then Article 13 देखिए, everyone has the right to freedom of movement and residence within the border of each state, and everyone has the right to live any country. तो एटा कौन होला? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. आर्टिकल 13 कौन कहला? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. आर्टिकल 13 कौन कहूची? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. Then Article 14 में देखिए, everyone has the right to seek and enjoy in other country asylum for prosecution, and this right may not be invoked in case of prosecutions. तो Article 14 में देखिए asylum, asylum गुण व्यक्ति अन्य कंट्री रे asylum नहीं परियो. तो Article 14 talk about asylum, asylum. Article 14 है asylum. तो Article 15 एटा पढ़ी ऑलरेडी पीओ कि everyone has the right to nationality, and no one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right of change his nationality. तो Article 15 कौन है? nationality ऊपर कहूची. Article 15 है nationality, nationality. Article 15 nationality. And Article 16 is men and women of full age without any limitation due to the race, nationality or religion have the right to marry and found a family. They are entitled to equal right as to marriage during marriage and its dissolution. So Article 16 talks about marriage and family. So it talks about marriage and family. Marriage and family ऊपर के कुछ Article 16, marriage and family. Article 17 talks about everyone has the right to own property alone as well as in association with other. No one shall be arbitrarily deprived of his property. तो एटा को कहूची ना राइट टू प्रॉपर्टी. आर्टिकल 17 कहूची राइट टू प्रॉपर्टी, जोटा ऑलरेडी फंडामेंटल राइट रु एबोलिश हो जाईची जदि हम कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से देखिबा. आर्टिकल 70 कोन हला? प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी. Then Article 18 कौन कहूची? राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्साइंस एंड रिलीजन. निज रिलीजन को प्रैक्टिस करि परिबो. And right include freedom of change his religion, belief and freedom either alone in community or in community with other and in public or private and manifest his religion. The belief जोड़े रहिबा. तो Article 18 है कौन? freedom of belief. Article 18 is freedom of belief, freedom of belief. Freedom of belief is Article 18. Article 19, everyone has right to freedom of opinion and expression, and right include freedom to hold opinion without interference and to seek, receive, impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. So Article 19 को होची ना freedom of opinion. So 19 is freedom of opinion, freedom of opinion. Freedom of opinion is Article 19. And Article 20, everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. No one may be compelled to belong to association. Article 20 talks about freedom of assembly. That freedom of peaceful assembly जोटा रहउची freedom of assembly जदि बेसिकली कहबा freedom of assembly, freedom of assembly. Article 20. देखिए 21, Article 21 कौन कहूची? राइट टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री डायरेक्टली और थ्रू फ्रीली चूजन रिप्रेजेंटेटिव और राइट ऑफ इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस.
and universal equal surface जोटा voting rights ऊपर कहूची आर्टिकल 21 कौन कहूची टेक पार्ट इन गवर्नमेंट जोटा कि voting rights है तो टेक पार्ट इन गवर्नमेंट टेक पार्ट इन गवर्नमेंट और voting rights universal adult suffrage जोटा कहूची जो voting right voting rights ऊपर कहूची आर्टिकल 21 then article 22 कौन कहूची right to social security everyone as a member of society has the right to social security entitled to realization through national effort international cooperation or in accordance with organization resource of each state economy social cultural right या ऊपर ही डिस्कशन करछि आर्टिकल 22 जोटा कोन right to social security right to social security हला social security social security ऊपर कोडा कहला आर्टिकल 22 then 23 कौन कहला everyone has the right to work to free of choice of employment to just favorable condition of work and protection against unemployment and right to equal pay for equal work and everyone who works has the right to just and favorable remuneration ऊपर रहिला that's the right to form and join trade union for protection of his interest article 23 कौन है right to work एटा कौन है right to work on his own choice right to work article 23 24 कौन है right to rest leisure and include reasonable limitation of working hour periodic holiday with pay एटा रोचे article 24 article 24 कौन है ना rest and leisure एटा जे देखिए rest and leisure ऊपर कहछि कि article 24 article 24 कौन है rest and leisure अब 25 कौन कहला right to a standard of living जोटा कि adequate living standard रहिला motherhood childhood care मध्ये रहउची article 25 कोन everyone has the right to standard of living जोटा basic facility जोटा basic need रहिला advocate for health and well being of himself and his family including food clothing housing medical care necessary social service रहिला motherhood and childhood care एगुडा facility मध्ये दिया जोटा कि right to basic necessity जोडा रहिला तारि ऊपर कहउची तो right to standard of living जोड़ा होचे आर्टिकल 25 राइट टू ए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर्टिकल 25 देन देखिबा 26 हला राइट टू एजुकेशन फ्री एटलीस्ट इन एलिमेंटरी एंड फंडामेंटल स्टेजेस तो राइट टू एजुकेशन होची आर्टिकल 26 रे आर्टिकल 26 कोन हला राइट टू एजुकेशन हला आर्टिकल 26 27 है right freely to participate in cultural life of community and enjoy the art and right to protection of moral and material interest एटाला कोन participate in cultural life talks about कोन हला participation in cultural life and 28 देखिबा everyone is entitled to a social and international order in which कोन right and freedom set forth in the declaration can be fully realized जोटा कि social order ऊपर कोच आर्टिकल 28 कोन कोची social order and 29 कौन कहले everyone has duty to the communities in which alone free and full development of his personality is possible and everyone shall be subject to only such limitation and determined by the law जोटा कि mutual responsibility कथा कहूची mutual responsibility as a individual as a human being mutual responsibility then article 30 जदि देखिबा कोन कहूची ना nothing in this declaration may be interpreted or implying for any state group or person right to engage in activity to perform out like freedom of state or personal interference like freedom from state or personal interference
freedom from state or personal interference. Freedom from state or personal interference over गुड़ा होची ना आर्टिकल 30. Freedom from state or personal interference आर्टिकल 30 तारे ऊपर होची. सो आमे 30 आर्टिकल देखिले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रो. देन देखिए आमे पीवाईक्यू कोन आसी यूडीएचआर ऊपर. तो यूपीएससी रे गोटे पीवाईक्यू आस्तिला. Other than the fundamental right, which of the following parts of Constitution of India reflect or reflects the principle and provision of Universal Declaration of Human Right? 1948 रे अडॉप्ट हेतला preamble, DPSP and fundamental duty. तो select the correct answer. 1 and 2 अच्छी, 2 only अच्छी and 1 and 3 अच्छी, 1 2 3 अच्छी. तो आंसर कौन होगा? So other than fundamental right, which of the following part of Constitution of India reflect principle and provision of Universal Declaration of Human Rights provision कोड़ा शो करूची ए भितरु. प्रिएम्बल रे देखिया प्रिएम्बल रे मध्ये अछि, डीपीएसपी रे मध्ये अछि, फंडामेंटल ड्यूटी रे मध्ये अछि. आंसर हो ऑल ऑफ द एबव. आंसर हो कोन ऑल ऑफ द एबव 1 2 एंड 3 सब गुडा रे शो करूची. आमे जे देखिबा प्रिएम्बल रे जदी हम देखिया गोटे इक्वालिटी प्रिएम्बल मध्ये कोन इक्वालिटी अछि. से बेला जदी देखिबा हम आर्टिकल 3 देखिबा यूडीएचआर रो एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन. तो प्रिएम्बल जदी देखिबा हम इक्वालिटी ऊपर कहूची प्रिएम्बल इक्वालिटी एटा जे देखिबा यूडीएचआर रो आर्टिकल 3 रे अछि. यूडीएचआर रो आर्टिकल 3 रे अछि इक्वालिटी. से बेला देखिबा डीपीएसपी कथा देखिबा तो जोड़ा रोचे आर्टिकल 22 रे हमें देखले कोन अछि. आर्टिकल 22 जदी हमें देखिबा कोन अछि ना आर्टिकल 22 रे गोटे प्रोविजन थिला हमरो राइट टू सोशल सिक्योरिटी. राइट टू सोशल सिक्योरिटी जो प्रोविजन थिला कोन असेट दैट इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट एटा ह्यूमन डिग्निटी अछि. तो सही कांसेप्ट सोशल सिक्योरिटी हमर डीपीएसपी रे मध्ये अछि. आर्टिकल सही कांसेप्ट जे देखिबा हमरो डीपीएसपी रे मध्ये अछि. राइट टू सोशल सिक्योरिटी जोड़ा अछि आर्टिकल 22 डीपीएसपी मध्ये कोन कहूची पीएसपी रे जोड़ा अछि सेटा यूडीएचआर आर्टिकल 22 रे अछि. पूरा फंडामेंटल ड्यूटी जदी देखिबा जोटा कि 51 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेटा आर्टिकल 29 रे अछि कोन ह्यूमन राइट मेंशन यूडीएचआर मेंशन कोन ड्यूटी रहिछि हमर कोन कोन ड्यूटी थिला सेटा मध्ये आर्टिकल 29 रे अछि. कि यूडीएचआर 29 आर्टिकल 29 रे अछि. यूडीएचआर आर्टिकल 29 रे अछि से प्रोविजन टा. यूडीएचआर आर्टिकल 29 रे अछि जोडा म्यूचुअल रिस्पांसिबिलिटी फंडामेंटल ड्यूटी रे अछि सेटा मध्ये. देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जदि डेली यूपीएससी रो 2020 रो देखिले देन ओपीएससी रो पूर्व वर्ष क्वेश्चन थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी.
आर्टिकल 21 अच्छी कौन आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आर्टिकल 17 ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट अच्छी और आर्टिकल 8 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट राइट टू प्राइवेसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 अच्छी एटा ठीक अच्छी एंड आर्टिकल 12 रे कौन अच्छी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट रे प्राइवेसी नो वन हैज द राइट टू इंटरफेरेंस विथ योर प्राइवेसी एंड फैमिली और होम एटा मध्य ठीक अच्छी बाकी एटा ए दुटा रे मध्य ठीक अच्छी तो आंसर हम ऑल ऑफ द एबव हम आंसर है ऑल ऑफ द एबव then देखिए which article of universal declaration of human right tells that the right of nationality depends on one's wish or everyone has the right to a nationality right to nationality हमार कितना और आर्टिकल कहउतला ना आर्टिकल 15 talks about right to nationality तो आर्टिकल 20 कौन बोला फ्रीडम ऑफ असेंबली आर्टिकल 20 है फ्रीडम ऑफ असेंबली फ्रीडम ऑफ असेंबली है 20 इन 25 जो देखिबा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 25 है कौन एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड आर्टिकल 30 जब देखिबा हमें फ्रीडम फ्रॉम स्टेट और पर्सनल इंटरफेरेंस फ्रीडम फ्रॉम स्टेट है आर्टिकल 30 सो राइट टू नेशनलिटी है आर्टिकल 15 रे जाउछि सो थैंक यू नेक्स्ट हमें अलग गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करिवा सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू